All right, sure. So next thing is Sports Governance Act. इस साल ही बिल पास हुआ है. Now it has become an act, Sports Governance Act. All right. So what is this act? The passing of sports. देखो आपको पता ही होगा पिछले साल काफी सारी कंट्रोवर्सी चली थी. विनेश फोगाट वाज देयर. उनकी कंट्रोवर्सी आपको पता होगी. ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह वाज देयर, है ना. सो इंडिया में जितने भी स्पोर्ट्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पोर्ट्स की जितनी भी पोजीशंस थी, उनको लेके कोई एक ऐसा एक्ट प्रॉपर नहीं था. ऑलराइट. जितने भी टेन्योर्स थे उसमें टेन्योर्स को ज्यादा टेन्योर के लिए कोई किसके पास भी पोजीशन थी वो टेन्योर को ज्यादा टाइम के लिए यूज कर रहा था. ऑलराइट. टेन्योर ऐसे कोई फिक्स नहीं था किसी का. एंड स्पोर्ट्स को लेके देयर वर अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स गोइंग. बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती थी कि इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो. सो पॉलिटिक्स इसमें ज्यादा थी. नाउ द गवर्नमेंट व्हाट इट हैज डन, इट हैज मेड अ स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट जिसमें प्रॉपर एक टेन्योर दिया गया है. ठीक है, कैसे कैसे सिलेक्शंस होंगी. टू मेक सिलेक्शंस मोर फेयर, द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट अप दिस स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट. ठीक है. सो इसी साल का है ये. एंड आई गिव यू अ कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो ऑन दिस थिंग. सो लीगल में द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन दीज एक्ट्स ऑल्सो. तो एक्ट्स आपको पहले ही पता होंगे. यू विल बी एबल टू रीड इट फास्टर in the exam and answer quickly also. So the passing of the Sports Governance Act is a timely relief and represents a watershed moment. It will hopefully address the above mentioned shortcomings. The act empowers the center to establish a national sports board. एक national sports board बनेगा इसमें, which will grant recognition to various national sporting federations and their affiliate units. This provision in particular will put an end to protracted battles for legitimacy waged by the rival federation within the same sport. So federations पर देर काफी इसमें भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि गैंग वॉर ही चल रहे थे इसमें. एक अलग सबने अपने अपने गैंग्स बनाए हुए थे इसमें. कभी किसी फेडरेशन के पास जाता था, कभी किसी फेडरेशन के पास. By making of this act, things will be sorted out. This act also establishes the National Olympic Committee, the National Paralympic Committee, and the National and Regional Sport Federation for each sport. हर एक sport के लिए there will be national and regional sport federations. Each of these bodies have also been mandated to establish a code of conduct in line with the international best practices prevailing in each sport. The Act also mandates that the executive committee for every sporting federation must constitute up to 15 members with at least 2 outstanding sports persons. So देखो impartial करने को की एक तरह से इसको ट्रांसपेरेंसी करने के लिए इसमें what have they made, 15 members की कमेटी होगी इसमें, 2 outstanding sports person and 4 women. Women participation को इसमें improve किया गया है. Moreover, the age and tenure limits are also defined. सो पहले क्या था, कोई एज लिमिट नहीं थी, कोई टेन्योर नहीं था. 10-10 साल से लोग बन के बैठे हुए थे. WFI के प्रेसिडेंट, स्पोर्ट्स में बहुत सारी ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन थी जिनमें टेन्योर को एक तरह से ज्यादा यूज कर रहे थे वो लोग. ऑलराइट. एज एंड टेन्योर लिमिट्स आर आल्सो डिफाइंड टू एंश्योर दैट फ्रेश टैलेंट एंड विगर is inducted in sports administration and that a few of its bearers from a particular region, religion or political affiliation do not have a monopoly over the administration of a sport. So this is a good thing. फर्स्ट जो हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए, जो हमारे एक होना चाहिए कि ओलंपिक्स में ज्यादा मेडल आए. ठीक है, कॉमनवेल्थ में ज्यादा मेडल्स आए. बट ऐसे पॉलिटिक्स चलेगी तो मेडल्स नहीं आ पाएंगे. ऑलराइट. सो दैट इज व्हाई दिस एक्ट वाज ब्रॉट फोर्थ. A national sports tribunal will be constituted to adjudicate disputes pertaining to, देखो एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनेगी, will be constituted to adjudicate disputes pertaining to sporting federations. This is a landmark provision as it would streamline sports related litigation by enabling matters to be decided by subject experts. Further, the unending rounds of litigation would be reduced as an appeal against a decision of the National Sports Tribunal would only lie before the Supreme Court.
सो सुप्रीम कोर्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, तो यस, इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी को एक तरह से द गवर्नमेंट हैज डन द ट्रांसपेरेंसी. ऑलराइट. The Sport Governance Act also ensures the oversight of elections or sporting federations. Elections होंगे proper, both national and regional, as it seeks to establish a national panel of electoral officers to oversee elections of national sports bodies. So ये काम देखो, elections मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के, लोकसभा के इलेक्शंस कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, बट ऐसे इलेक्शंस भी होते हैं. ठीक है, सो इसके लिए अलग प्रोविजंस हैं इलेक्शंस के लिए. It seeks to establish a national panel of electoral officers to oversee elections of national sports bodies. All right. It calls upon national sports bodies to constitute a panel to oversee the elections of their affiliates. Disqualification is a significant deterrent for non-compliant federations to ensure that the Act's provisions are complied with. All right. So this was the Sports Governance Act. This is important. ऑलराइट, इसको रीड करना आप अच्छे से. ठीक है.